मार्क वुड का ओवर होल्ड किया है एंड क्रिस वोक्स स्टार्टिंग द 19th ओवर और पहली बॉल पे एक रन ही बन पाएगा और इट्स Sodi who tries to hit and go big towards long on but just manages to take one run and bowlers fast bowlers बहुत अच्छे रहे और it will be three teams three sides on कहूँगा 5 रन पे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड का बड़ा मैच नहीं है 2 के आयरलैंड से खेलना है और मे बी आयरलैंड से है या मे बी मुझे याद नहीं है श्रीलंका से है तो देखना होगा इस चीज़ को सेंटर ट्राइज टू गो बिग और डीप बैकवर्ड पॉइंट की जानिब खेले और एक रन ही बनेगा गुड बॉलिंग फ्रॉम क्रिस वॉक्स मौका रूम नहीं दे रहे और अच्छी बॉल फेंक रहे हैं 10 बॉल्स में 38 रन और 15 रन इसमें से कम करें तो 10 बॉल में 23 रन अब भी मुश्किल नहीं था इट इज बिकॉज के विलियमसन मेरे ख्याल में जो न्यूजीलैंड मैच हारा है वो माशाल्लाह कैप्टन की जबरदस्त इनिंग की वजह से हारेगा और 40 बॉल में 40 रन की जबरदस्त इनिंग खेली बॉडी पे हिट किया कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे और इन दी एंड एक रन बनाया लेग बाय का और इस सोडी कोशिश कर रहे हैं बट ऑल ही नोज के इट्स बियॉन्ड हिज कैपेसिटी और अच्छा बॉल किया क्रिस वॉक्स ने इस पोल की सिचुएशन वाइड ओपन हो चुकी है एंड इट डिपेंड्स ऑन द नेक्स्ट कमिंग अप गेम्स के कौन जीता है एक जो मैच बारिश की नजर हुआ अगर वो हो जाता तो क्लियर सिचुएशन होती कि इंग्लैंड जाएगा या ऑस्ट्रेलिया ट्राइज टू गो बिग और लॉन्ग ऑफ वाइडिश एरिया में खेले सेनेटनर और 2 रन ही बन पाएंगे और गुड बॉलिंग और वो पूरा बॉल पे आने ही नहीं दे रहे सेनेटनर को दैट्स व्हाई ही इज रिस्ट्रिक्टिंग और अच्छी बॉल फेंकते हुए और फिनिश कर रहे हैं नाइसली मेरे ख्याल में इट्स गुड ही इज यूटिलाइजिंग एंड बॉलिंग इट नाइसली बॉलिंग इन द राइट चैनल और द ग्रुप इट वाइड ओपन अगर न्यूजीलैंड एक और मैच हार जाता फिर तो दोनों चले जाएंगे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ऐसा होगा नहीं बट this time senator hit it to the long on region for take another couple और डेफिनेटली रन रेट जो है वो मैटर करता है और मैं 160 to 65 बोला था कि कर पाएंगे इतना स्कोर लेट्स सी कि इतना बनता है कि नहीं बिकॉज इसके लिए भी 10 से 12 रन मजीद चाहिए एंड 7 balls 33 runs and English fans are excited and pumped up wide delivery it will be a wider one yes umpire gave it wide and Vokes had to ball it again it's the last ball of 19th over it was the big game and England stood tall in this game and hold their nerves in the end earlier I told you that they were बिग हिट करने चाहते थे लेकिन मेरे ख्याल में आउट होंगे नहीं एक छक्का आ गया है एंड सब वेरी क्रूशियल 155 19th over complete and it will be Mark Wood who has to defend 25 runs in this last over और let's see क्या बनता है ये सिर्फ मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि 25 रन चाहिए अगर केन विलियमसन बात होती है कि इतना बड़ा प्लेयर है अगर वो 40 बॉल्स में 40 की इनिंग खेल रहा है तो क्या फायदा है कोई फायदा नहीं है और अगर वही 40 बॉल्स में वो 55 की इनिंग खेलता तो अब भी 10 रन चाहिए था तो दिस इज द डिफरेंस और Sam Curran had to bowl the last of his spell and he is the sort of bowler जो कि स्किडी बॉल कराता है एक दो बॉल्स होंगी पहली बॉल मोस्टली होगी जिस पे नर्व होगी और अगर पहली बीट करा दी तो इट विल बी लॉट इजियर फॉर हिम बिकॉज ही इज डूइंग वेरी फाइन इज सोडी टू फेस सैम करन
Oh, misses it. Yes, this is what is needed at the moment. Fires it in outside off stump and a dot one. Brilliant bowling. He is the man who is in top form for the England side and मेरे ख्याल में आज का मैच कॉस्ट किया है टर्निंग पॉइंट होगा 40 बॉल्स में 40 की वो इनिंग्स जो कि केन विलियमसन ने खेली एंड केन विलियमसन just manages to score 40 of his 40 delivery knock इस जोड़ी ने हिट किया और सीधा मिड विकेट की जानिब गया जहां बेन स्टोक खड़े हैं और मे बी एक ही रन बनेगा एंड लास्ट 4 डिलीवरीज पे 4 छक्के भी जीत नहीं दे सकते एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 165 ही कर पाएगा न्यूजीलैंड और दिस इज सेम हैपनिंग इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी केन विलियमसन की केन विलियमसन ने 40 बॉल्स में 40 रन खेला इस तरह के प्लेयर्स की अब टी20 क्रिकेट में वैसी जगह नहीं है आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरे ख्याल में विलियमसन रिटायर होगा मतलब कि इस वर्ल्ड कप के बाद वैसे मैं सपोर्ट कर रहा हूँ न्यूजीलैंड को एंड मैं कहता हूँ कि साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड दोनों में से कोई भी वर्ल्ड कप जीते इट्स अ वाइड डिलीवरी और बट मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जस्ट बटलर हैज रिव्यूड इट और अगर ये रिव्यू डेफिनेटली किस चीज़ का होगा समझ नहीं आता बिकॉज इट डिडंट हिट एनीथिंग और इट मिसेस एवरीथिंग गोन डाउन टुवर्ड्स लेग स्टंप और it it could be a wide and 25 needed of the last 4 deliveries and if it would be given a wide then 20 yes nothing and it will be a wide 156 and 4 balls left and 24 runs needed 4 sixes there's nothing and the ball just moves away and went with angle into the hands of wicketkeeper and it's nothing and it's a wide given yes 4 बॉल रहते हैं और 4 कार्लोस ब्राथवेट को एंटर होना पड़ेगा to hit that booming sixes और yes just hit for 2 runs long on की जानिब हिट किया और easily completed 2 runs और now the game is over and England have win it for themselves and to keep them alive in this World Cup. Now Group 1 is important and open for everyone to chip in and win. Run rate will matter in the end. Good Yorker dot ball and a fine Yorker. 158 for 6 New Zealand. Well short of the target. 22 needed of the last 2 deliveries and it is the knock played by Kane Williamson has hurt New Zealand badly. 40 runs of 40 deliveries. I don't know how and why he goes that slow. Good bouncer, good ball and a dot delivery. One of the over. Sam Curran is a very handy bowler and didn't give away too many 4 runs in 5 deliveries of his 20th over. He's in good form, doing everything perfectly, and the result is there for him.
Good Yorker, and England have won it convincingly. Yes. One run in the end, and crucial 2 points to the England, and England have won it. Fine performance from English side, and it all because that Williamson has struggled big time and didn't able to score freely, and just manages to score 40 runs of his 40 deliveries, and the knock was not right. You can say that such knocks will help when the target is under 160 somewhere around, but if you had to go for 180s, then all your batter must chip in and must score nicely. So this was not really happened, and Williamson falters in the end, and Williamson knock caused in the end a defeat for New Zealand, and the pool is wide open, and you can say that in coming up games there will be very different scenario. All three teams are on 5 points now. New Zealand, Australia, and England. It will be very interesting to see who will be going into the semi-finals from this stage. All three sides has to win, and they don't have to play against each other now. We'll be playing against Afghanistan, Sri Lanka, or and Ireland. So all these three sides have easy games coming up now. Run rate will matter, and it will be Ireland and New Zealand, Australia and Afghanistan, and England have to beat Asian champions to get themselves booked for the knockout slot of semi-finals. It will. This group is wide open, and England, Australia, and New Zealand. None of three can afford a defeat. All three are at the same playing for the semi-finals and having same points, 5 points each. England have bowled well and gone well. And as far as Group 2 is concerned, it will be South Africa and India most probably will be going to the semi-final stage, because a very tough and bleak chance for Pakistan, though Bangladesh has to win against both India and Pakistan to qualify for the semi-final stage. And a big win for England, and it keeps their chances alive, and very good win. Kane Williamson not did well for New Zealand, winning England winning by a margin of 40 runs, and margin of 20 runs, and these runs can be covered by Kane Williamson. He played 40 deliveries for his 40 runs. Williamson बहुत easy रहा और अच्छा नहीं खेला आज. मैं सिर्फ ये कहूँगा कि विलियमसन बिल्कुल भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नहीं खेला, और इवन दो के 25 बॉल्स में 26 रन था और वो कैरी ऑन किया आखिरी 15 बॉल्स, और न्यूजीलैंड स्टिल रन रेट अच्छा है और इंग्लैंड टॉप पे आ गया रन रेट की वजह से, और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जो है वो नीचे है, बट ऑस्ट्रेलिया के पास भी चांस है टॉप थ्री को अदर थ्री के साथ मैच करना है. न्यूजीलैंड विल बी प्लेइंग अगेंस्ट आयरलैंड, इंग्लैंड विल बी अगेंस्ट श्रीलंका, एंड ऑस्ट्रेलिया विल बी अगेंस्ट अफगानिस्तान. ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान और इंग्लैंड और श्रीलंका का मैच टफ हो सकता है. टर्निंग पॉइंट जो दिया जा रहा है वो नेशम का कैच है, बट अपार्ट फ्रॉम इट मेरे ख्याल में जो इनिंग है जो कंटेन किया इंग्लैंड ने विलियमसन को 40 डिलीवरीज में 40 रन्स, लाइक रिजवान सॉर्ट ऑफ इनिंग थी.
मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई ये इनिंग। इट हैड टू बी लॉट गुड एंड मेरे ख्याल में इन 40 डिलीवरीज में मैनेज करना चाहिए था 55 रन एटलीस्ट। सो तब कुछ सिचुएशन बनती कि न्यूजीलैंड क्लोज इन कर पाती गैप। और अब तो सिचुएशन क्लियर है, 20 रन के मार्जिन से हार गए हैं। मिडल ओवर्स में न्यूजीलैंड लीड कर रहा था एंड देन मुझे एक्सपेक्टेड था कि कलैप्स आएगा और 14वें ओवर के बाद वो कलैप्स आया और होल्ड ऑन नहीं कर सका न्यूजीलैंड। और इन दी एंड न्यूजीलैंड मैच हार गया और इंग्लैंड विनिंग क्वाइट इजीली एंड स्टिल ऑन ग्रुप वाइड ओपन। तीनों टीम्स को जीतना है और कन्विंसिंगली जीतना है और जिसका मैच एंड में होगा उसके लिए काफ़ी फेवर होगी। जिसका बाद में है कि कितना मार्जिन से जीतना है, कितना रन रेट कैसे उठाना है, वो क्लियर होगा और आसान होगा। ये मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस ग्रुप का आखिरी जो मैच है वो कौन खेलेगा, वो चीज़ डिफाइन करेगा। आयरलैंड और न्यूजीलैंड का मैच पहले होना है और इट विल बी ऑन थर्सडे, परसों है। और न्यूजीलैंड का इतना मसला नहीं है रन रेट का, 2+ रन रेट से। उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया एंड अफगानिस्तान का मैच है फ्राइडे। और सैटरडे को आखिरी जो मैच है इंग्लैंड श्रीलंका है, तो इट विल नॉट बी इजी फॉर इंग्लैंड टू गेन टू मच एज फार एज रन रेट इज कंसर्न। अगर वो स्कोर कर लेते हैं तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज बड़ा टफ गेम हो सकता है क्योंकि श्रीलंका ऐसी टीम है जो कि हरा भी सकती है। सो सिचुएशन ऐसी है कि ऑस्ट्रेलिया का रन रेट -0.5 है और इंग्लैंड का +0.5 है, तो एक पॉइंट पूरे का गैप है। तो इट हैड टू बी कवर इफ ऑस्ट्रेलिया हैज टू गो इन द सेमीफाइनल्स। और मेरी तरफ से मेरे लिहाज में सेमीफाइनल्स जो हैं वो श्रीलंका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड है इस ग्रुप से। एंड फ्रॉम द अदर आई थिंक के साउथ अफ्रीका और इंडिया जो हैं जाएंगी। और अगर न्यूजीलैंड टॉप करेगा तो फिर इट विल बी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो मैच बहुत दिलचस्प होने वाला है। इंशाल्लाह आपके साथ लेके आएंगे स्ट्रीम और विल बी बैक विद लॉट मोर मैचेस। तब तक के लिए अपने होस्ट को इजाज़त दीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।